अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। वर्ल्ड कप के बाद ये पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप के दरमियान आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप कवर किया, ख़ास तौर पे मेन मैचेस को मैंने कवर करने की कोशिश की। हर मैच को मैंने नहीं कवर किया, जो इम्पोर्टेंट मैचेस थे उनको कवर करने की कोशिश की और आई होप कि आपको वो कंटेंट पसंद आया होगा। वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमने देखी, below average. Pakistan could not even qualify for the semi-finals. Pakistan cricket board has been an absolute mess. Even during the World Cup, बेइंतहा controversies पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुई। नज़र आया है कि लीडरशिप लैक करती है, कोई विजन नहीं है, एक केओस था टीम के ऊपर। सारी जिम्मेदारी डाली जा रही थी, चीफ सेलेक्टर पे डाली जा रही थी। चीफ सेलेक्टर ने बीच में रिज़ाइन किया, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी जिसका आज तक नहीं पता। मोहम्मद हफीज़ ने टेक्निकल कमेटी से रिज़ाइन किया और फिर अब वो सबसे अहम रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापस आ गए। उसी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने उनको फिर अपॉइंट कर दिया है, जिनको मोहम्मद हफीज़ ने एम्बैरेस किया था टेक्निकल कमेटी छोड़ के। एनीवेज़, बाबर आजम इज़ एक्सपेक्टेड रिज़ाइन किया, उनसे फोर्सफुली लिया गया या उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया, वी डोंट नो। जो न्यूज़ है वो यही है कि उनसे वाइट बॉल की कैप्टनसी ले लेने का फ़ैसला किया गया और उनसे कहा कि वो टेस्ट मैच में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। बाबर हैज़ लेड द टीम फॉर ऑलमोस्ट 4 years और हर एक का एक टाइम होता है। आई थिंक बाबर शुड गो एंड enjoy playing for Pakistan as a batsman. He's a world-class batsman. The whole of Pakistan is so proud of him, and I think he has his time. He had his time as the captain of Pakistan team for 4 years. He had some success, and he did not have some success, which is part and parcel of the job. It's a thankless job. But at the same time, I think I'm sure Babar did his best. One thing that we did see जब बाबर कप्तान थे कि टीम के अंदर एक यूनिटी थी। बाबर की बैटिंग को ज़रूर फ्रॉम टाइम टू टाइम उसने इफ़ेक्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ इज़ द टाइम फॉर बाबर टू गो एंड जस्ट बैट फॉर पाकिस्तान एंड बिकम द वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन दैट ही ऑलरेडी इज़। लेकिन अब अपनी परफॉर्मेंसेस को वो किसी और लेवल पे लेके जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस एज अ बैट्समैन दे सकते हैं। जो चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टनसी में, वो ये हुई कि एज़ एक्सपेक्टेड शान मसूद को टेस्ट मैच टीम का कप्तान बनाया गया और T20 का कप्तान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ। पाकिस्तान की अभी जो अपकमिंग सीरीज़ है वो टेस्ट मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 टेस्ट मैचेस, इसमें शान पहली दफ़ा पाकिस्तान को लीड करेंगे एज अ टेस्ट मैच कैप्टन। हाउ चैलेंजिंग इट विल बी, उसके ऊपर मैं डिटेल में इस पर भी कवर करता हूँ। शाहीन को कप्तान बनाया गया T20 का। इज़ इट अ गुड डिसीजन? what Shaheen can do or deliver, what about his fitness, what about his form? There are a lot of questions right now behind this on this decision. तो उनको इस सब प्रोग्राम के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल साइड पे आज मैं इसको रखूँगा, क्योंकि जहाँ पे लीडरशिप की बात आती है वहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। तो मैं शान की कैप्टनसी के उनके क्या इसके अंदर उनको चैलेंजेस होंगे, क्या शान की स्ट्रेंथ हैं, क्या उनको करना चाहिए पॉसिबली टू गेन दैट प्राइड एंड गुड परफॉर्मेंसेस फॉर पाकिस्तान एंड टू बी अ सक्सेसफुल कैप्टन। लेकिन इस सब डिस्कस करने से पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि शान मसूद जिनको कप्तान बनाया गया है, ही डज़ नॉट हैव अ फिनोमिनल टेस्ट रिकॉर्ड। देखिए टेस्ट मैच में, एंड इट्स ओके, इट डज़ंट मैटर। ग्राहम स्मिथ हमारे सामने एग्जांपल हैं। ही नेवर हैड अ फिनोमिनल रिकॉर्ड एज अ प्लेयर। वो ड्रॉप होते थे, इन होते थे, बट एट द एज ऑफ 22 ही वाज मेड द कैप्टन फॉर साउथ अफ्रीका आफ्टर हेंसी क्रोनी क्राइसिस और शॉन पॉलक का चला जाना, और फिर देवर साउथ अफ्रीका वाज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। और ये स्पोर्ट्स के अंदर हमें बेइंतहा मिसालें मिलती हैं। स्टीवन स्मिथ की मिली, कमिंस की मिली हमें। सो शान, वी नो ही इज़ एजुकेटेड, he would represent Pakistan as a very fine ambassador, very educated, very well spoken, comes from a very good and well-off family. The rest of them as well. लेकिन शान को सिर्फ जो एज है वो ये है कि he has lived most of his life in England, went to university here, he's a graduate here from England, and he can carry himself
very well. He's got captaincy experience in domestic cricket in Pakistan, in franchise cricket in Pakistan, as well as he's a club captain of Yorkshire County Cricket Club. So and जिसके अंदर जो रूट हैं बर्स्टो हैं इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स उस काउंटी में खेलते हैं. शान इज़ द कैप्टन. तो ये शान के साथ एक थोड़ा सा एक एडवांटेज है. जो सबसे बड़ा चैलेंजेस हैं शान के लिए वो ये कि हाउ विल ही इंस्पायर हिज टीम. पाकिस्तान के कल्चर के अंदर अगर एक कैप्टन की इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेस ना हो, हाउ वुड ही गेन दैट रिस्पेक्ट. ये हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं किसी भी कप्तान के लिए जिसका एक फिनोमिनल टेस्ट रिकॉर्ड ना हो, हु इज़ नॉट लुक्ड अप बाय द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स. उनसे बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान टीम के अंदर रिकॉर्ड वाइज हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका रिकॉर्ड बिकॉज ही हैज़ नॉट हैड he did have enough chances at the same time, but sometimes he could not capitalize. But his consistency, his persistence should be यहाँ पे उसको मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि whenever he's been dropped from the Pakistan team, he went back to the domestic cricket, he scored heavily, worked on his technique, and he always came back as a better player. His fitness, one of the fittest player in Pakistan cricket, his work ethics, his discipline, he can lead from the front on those sides. He can lead by example, you know. So how can he transform the team? What Babar Azam did or could not do, how can he do that? How can he make Pakistan one of the best test team in the world? How can he bring in the fighting spirit amongst his team players? वो अपनी फ़िलासफ़ी टीम के अंदर किस तरीके से टीम के प्लेयर्स को क्या वो करेंगे जिससे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो हैं जिसके अंदर काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनकी फ़िलासफ़ी को बाय इन करें. हमें यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ये वो टीम है जो 4 साल से बाबर आज़म की कैप्टनसी के अंदर खेल रही है. और बाबर आज़म एक बहुत सेंट्रल फिगर थे इस टीम के तमाम मेंबर्स उनको एज ए लीडर एक्सेप्ट करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. एंड बाबर ने एक टीम के अंदर एक यूनिटी कायम करके रखी हुई थी. सो दैट्स एन एलिमेंट. अब जो भी कोई नया कैप्टन आता है ही हैज़ हिज ओन फिलॉसफी. उसका अपना वो अपनी टीम को किस तरीके से इंस्पायर करता है, वो किस तरीके से लीड करता है, वो अपनी एक स्टैम्प किस तरीके से टीम पे बिठाते हैं. तो शान हैज़ टू टेक सम वेरी सीरियस एक्शंस ओवर हियर एंड सम सीरियस डिसीजंस to stamp his authority on the team that he is the leader now. He has to announce himself as a leader through his actions, through his decisions. Actions के बगैर और decision के बगैर शान के लिए कैप्टनसी करना will be very difficult in the presence of Babar Azam, at the same time in the presence of Sarfraz Ahmed, and at the same time in the presence of all those players जिनकी एक loyalty है बाबर आज़म की तरफ. So this is a very challenging task for Shan. What Shan can do over here, first of all, he need to get rid of few players. He need to bring in the players that which shows, especially from selection point of view, कि वो किस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए. एज ए लीडर वो किस तरीके से टीम को मूव फॉरवर्ड कराना चाहते हैं. आइदर इट बी ड्रॉपिंग रिजवान, आइदर इट बी ड्रॉपिंग सरफराज एंड ब्रिंगिंग इन मे बी आज़म खान. You know, I think आज़म खान should have been there. मैं उन प्लेयर्स के भी पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए. 2-3 नए प्लेयर्स उसके अंदर शामिल किए गए. साइम अयूब आए, अगेन दैट्स अ गुड इंक्लूजन. फ़खर जमान could have made a comeback into test match cricket. फ़खर जमान इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जहाँ पे वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, ही इज़ मोर प्लेइंग इन फ्रॉम द क्रीज और बैक फुट पे, और उनका कट और पुल अच्छा है. He could have been a brilliant option. Now this is where Shan Masood has to put his foot down now, and he has to do that now. He would not have enough time. जब भी एक नया कप्तान आता है, he has to get the ball rolling from the word go. He could not wait कि इस सीरीज़ के बाद या उस सीरीज़ के बाद. He has to be authoritative. He has to have his stamp on the team. I think that's where Shan, I personally think, have missed the trick. Shan is coming. जो भी अभी तक ऑप्टिक्स आ रहे हैं मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो वो वीडियोस रिलीज़ कर रहा है, वहाँ पे शान का जो इमेज आ रहा है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट राइट नाउ. एंड दिस इज़ नॉट a good sign for a leader who has just taken over a captaincy and who has got some serious challenges within the team in terms of the current 2 captains, Babar and unse pehle Sarfraz, are as part of the team, and they have their players who have their loyalty.
तो यहाँ पे शान ने उन प्लेयर्स की कैसे लॉयल्टी लेनी है देखें। सबसे पहले शान को मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी मैं बात करता रहूँगा बीच में। सबसे पहले शान को अपना विजन देना होगा प्लेयर्स को, एंड ऑल द प्लेयर्स ही हैज़ टू मेक श्योर दैट दे आर इन लाइन विद हिज विजन कि क्या वो अचीव करना चाहता है, उसकी प्लेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद विजन, उसके बाद क्या सपोर्ट सिस्टम शान उस विजन को अचीव करने के लिए ले डाउन करता है, किस तरीके से क्या प्रैक्टिसेस होंगी, क्या प्लेयर्स को सपोर्ट मिलेगी टू अचीव दैट विजन। और फिर शान किस तरीके से उन प्लेयर्स को चैलेंज करता है टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, क्या उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड विल ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो एक परफॉर्मेंस का बार रेस करेगा अपनी परफॉर्मेंस से फॉर द टीम टू फॉलो। नाउ दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स किसी भी स्पोर्ट के अंदर, इट्स विजन, इट्स सपोर्ट, इट्स चैलेंज। ये 3 चीज़ें जो होती हैं, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी लीडर को आते के साथ ही ले डाउन करना होती हैं। अगर शान ये मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो शान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि विजन, सपोर्ट एंड चैलेंज, ही हैज़ टू ले डाउन दीज थिंग्स। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैंने कुछ प्लेयर्स के साथ 1-on-1 काम किया है पाकिस्तान टीम में काम करने से पहले और पाकिस्तान टीम में काम करने के बाद, एंड शान मसूद हैज़ बीन वन ऑफ दैट प्लेयर जिसके साथ मैंने 1-on-1 बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है। एंड यू नो, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, बट एट द सेम टाइम he has got some challenges. He has been married recently, obviously, and how will he balance his marriage life with this new responsibility, being the captain of the Pakistan, being the captain of the county cricket? You know, it's a challenge. मेरे ख्याल में जो सबसे important चीज़ होगी शान के जहन में, he is 34, he might have 3, 4, 5 more years to play for Pakistan, maybe 4 years if he contain himself to 1 or 2 formats. In time, not now, maybe in couple of years time to prolong his career. That's something that he has to decide. So शान के लिए ये एक challenges हैं, and शान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके परफॉर्मेंस टीम से क्या एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या एक गोल उसने सेट किया है, क्या वो टीम के प्लेयर्स उसमें बाय इन कर रहे हैं। You know, these are the things that Shan has to be very clear. अगर आप किसी भी दुनिया में क्रिकेट के अंदर देख लें, उसके अंदर जो कैप्टन होता है he is the most integral part. I mean, he is the only thing जो कि एक विजन देता है, जिसकी एक फ़िलॉसफी चलती है, जो सपोर्ट स्टाफ अपना लेके आता है, जो उसके साथ जिसकी एक इंक्लिनेशन हो, जिसके साथ उसकी एक वेव लेंथ पे हो। यहाँ पे शान को जो सबसे बड़ा क्लैश आएगा वो हफीज़ की पर्सनालिटी का आएगा। हफीज़ जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने, अब उन्होंने कोचिंग का भी रोल ले लिया है। फिर वो सईद अजमल को लेके आए, फिर वो उमर गुल को लेके आए कि यहाँ पे शान से पूछा गया, इज़ शान हैप्पी विद दैट? आई पर्सनली थिंक, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे शान हैज़ टू बी, शुड हैव बीन मोर अग्रेसिव, ही शुड हैव बीन मोर क्लियर of what kind of coaches he want. I don't think so that Hafeez is a good choice. He has not even done any coaching courses or anything. Playing cricket and then coaching are 2 different things. Hafeez, personally I believe that he has a very negative mindset. अगर आप कोई भी चीज़ उनके सामने रखेंगे, so his mind would automatically go towards a negative side. अगर उस चीज़ के अंदर 10 अच्छाइयाँ हैं और एक थोड़ी सी कमी है, तो हफीज़ का माइंडसेट इस तरह का है कि वो नेगेटिव चीज़ की तरफ जाएगा। तो ये शान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है कि हफीज़ विल नॉट लास्ट लॉन्ग इन बोथ द रोल्स, आइदर एज अ कोच और एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। ही टॉक्स बट ही डज़ नॉट वॉक द टॉक और टॉक द वॉक, एज यू कुड से। So Shan, I think, will have problems with him. Shan has to put his foot down. Shan has to bring in his own coaching staff. Shan has to make some changes into the team. He has to get rid of some old dogs from the team. He has to bring in some new blood into the team जो कि उसकी philosophy के ऊपर buy in करें, and he has to lead from the front. He's the boss and he has to think like that. Right now his body language is not like that. He's going to Australia, he either win or lose, doesn't matter. He need to bring in that spice into the Pakistan team body language. They have to be up front. आप इंडिया गांगुली के एरा से लेके विराट कोहली के एरा तक की टीम शान को स्टडी करना चाहिए कि how India changed their approach towards cricket. They were very soft before Saurav Ganguly, and you know Saurav Ganguly brought that fighting instinct to take on the opposition. This is what Shan need to do. This Pakistan team is very soft.
for some reason they have this thing in mind that we need to portray a very soft image, they're very friendly. It doesn't work like that. When you walk into that field, it's a fight, it's a war. Can Shan install and can inject that kind of a temperament, that kind of aggression into the team? That's again a challenge for Shan Masood. And this is very important nowadays, that Shan has to do that. Shan has to install and inject the kind of aggression that he wants from his team to achieve the best performance that he could. He has to lay down the goals very clearly with every player, okay, what is expected from them, that how he wants to raise the bar of the performance of the players as an individual or team ka bhi. So there are a lot of challenges that Shan is facing. How will he tackle the Pakistan Cricket Board, which is ever changing? हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन चेंज हो जाता है, आपके कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. Shan has to be consistent. Shan has to provide that protection to his youngsters that he will be bringing into the team. Shan has to put his label and stamp on the selection of his team. He need to get rid of few players from the team, and that's me being extremely honest with you. This is what it is. So a lot of challenges, but I'm sure कि शान ने अगर ये मेरा मैसेज, ये वीडियो देखा है, which I'm sure he will see, and he will pick up the right thing. He need to raise the bar and his performances. He need to lead from the front. He need to score heavily in Australia. If he score a 50, he should convert that into 100. If he score 100, he should convert that into double 100. He need to lead from the front. He need to inspire his team. He need to create a positive environment within the dressing room. And that's what it is. He need to create an environment where players are trusted by him, and at the same time the players trust him as a leader. So what will he do to achieve that? That's again something that Shan need to work out, or you need to get services of an expert for that, maybe a psychologist or somebody that need to be associated with the team. So serious challenges for Shan, and I hope, look, I can only wish him all the success. It's a challenging tour for Australia, but can Pakistan just go there to compete, or is Pakistan going there to win? Now that is the most critical question, and that's where Shan's captaincy and how long Shan will captain this Pakistan team will be determined what message he gives to the team. Either he's going to compete or either he's going to win. If he's going to compete, what are the realistic goals? If he's going to win, what is he expecting from the players? So some serious questions for Shan here, some serious challenges. I think it's a good decision by the Pakistan Cricket Board as long as Shan लंबे अरसे के लिए कप्तान रहते हैं और Shan take the right decision. Coming on to Shaheen Shah Afridi, I think he has proved in T20 cricket and franchise cricket, leading his franchise into 2 back-to-back titles. So I'm quite excited. I'm quite happy to see Shaheen leading Pakistan in T20. We know कि एक गेम, एक लॉबी और एक कैंपेन चलाई गई शाहीन को कप्तान बनाने के लिए, बट आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ दैट. Though different style of personalities will be leading to different style of cricket, one test match, one white ball. So it'll be very interesting to see. But I hope these two captains are given a long run. And Pakistan cricket के अंदर changes भी होती हैं, जो नया भी board आता है वो इन दोनों को support करता है. I think Shan has missed the trick. He should have brought in Azam Khan. He should have brought in Fakhar Zaman. He should have brought in Abbas Afridi. And he should have bring in some rookie Chinamen for even an experience. Shan need to, I personally think that Shan will struggle with Mohammad Hafeez. Even I think Shaheen will struggle with Mohammad Hafeez. I personally predict that Mohammad Hafeez will not last in any role, either as a director of cricket or as a coach. So let's see. I hope it's a temporary arrangement. But I hope कि Shan will have challenges. अगर Shan और Shaheen एक positive एक vision देते हैं टीम को और एक positive माहौल create करने की कोशिश करते हैं, but when your coach is negative and his mind is inclined towards the negative side of the things, then it becomes very challenging. I hope that things go in the right direction. I've tried to give you an analysis knowing both Shaheen, both Shan, Hafeez at the same time.
गिविंग यू द साइकोलॉजिकल एनालिसिस के कोचेस कैप्टन को किस तरीके से अपनी स्टैम्प बिठानी होती है, विजन, सपोर्ट, चैलेंज किस तरीके से ले डाउन करना होता है, टीम का ट्रस्ट कैसे गेन करना होता है, अपनी फ़िलासफ़ी कैसे लेके आनी होती है, अपनी अथॉरिटी उस टीम के ऊपर कैसे लेके आनी होती है। कुछ प्लेयर्स को ही हैज़ टू गेट रेड ऑफ टू हैव हिज अथॉरिटी एंड यू नो दीज डिसीजंस हैव टू बी मेड। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया एंड यू नो आई रियली अर्ज यू ऑल टू सब्सक्राइब, टू शेयर, टू कमेंट and that gives me encouragement. You've been tuned in to Timmy Talks Cricket. Thank you.